So Wealth Baskets as a product, we have launched this product in Recording in progress. So we have launched Wealth Baskets as a product in September 2021. So the idea behind this is basically we wanted to kind of launch this advisory marketplace on Paytm Money, so that for all the users on Paytm Money, they have this option to a go-to solution for all their investment needs. Not just about equities, it's about so we wanted to expand this particular advisory marketplace offering to all the asset classes possible that Paytm Money is going to enter into in the future. So that's the idea behind this. And as a first step in building our advisory marketplace, we thought that Wealth Desk is the right partner for us to get into. And so Wealth Baskets is a product offered by Wealth Desk, and this product was launched in September 2021. And post that, we had seen some other offerings also coming up in the advisory marketplace, which is Pops, which would be covered in the later half of the session. So coming to Wealth Baskets. So Wealth Baskets. So what are Wealth Baskets? Basically, as the name suggests, it's a basket of stocks or ETFs. So we kind of so there are some advisors and analysts, SEBI registered advisors and analysts, who kind of do a lot of research and kind of put all of this research into a particular basket kind of a model. So this particular basket consists of 10 to 12 stocks, or sometimes it comes with 3 to 5 ETFs in it and all of that. So these are nothing but a shorter portfolios. Something like a shorter version of mutual funds is what I would call them. So completely, coming from the industry, you guys also know that the mutual funds there are some sort of gaps in the mutual funds, which with something like mutual funds, the best performing mutual funds usually gain very, very high AUM, and to match that AUM, kind of the portfolio gets diversified a lot. Most of the best performing mutual fund schemes, you would see that their portfolio consists of more than 50-60 stocks and all of that. So what happens with this diversification is that the benefits of actually following a particular strategy will be missed while you kind of invest in a mutual fund which invests in over 50 to 60 stocks. So what I'm trying to say is that you as a fund manager, you want to have a focused portfolio of say 10-12 stocks which you have full conviction on, which you want to which you feel that would actually do well over the coming period, over the coming 12 months of time, or whatever time period it is. But in a way, so mutual funds cannot give you that thing, because the funds have to be deployed in all of these. So you cannot kind of deploy the funds the way you like it. Basically, once the fund size gets bigger, you cannot deploy these funds only into the stocks that you want. So that way, what happens is that your active returns come down, and you kind of get into that zone where your mutual fund copies exactly the benchmark indices only. So that's how that is one of the major drawbacks of mutual funds. Whereas coming to Wealth Baskets, what happens here is that you have that flexibility of being invested in only those particular stocks that you have full conviction on, or what your advisor kind of tells you to be invested in. So yeah, so like I said, these are managed by SEBI registered professionals being research analysts and registered investment advisors. And so, like I said, the next point, these are stocks directly residing in your account. So Wealth Basket is nothing but a strategy prescribed by an advisor or an analyst, basically. So once you subscribe to that particular strategy, so Nihal, can you just post your question in the Q&A? We'll take it up at the end of the session. Yeah, sorry. So once you kind of subscribe to this particular strategy, what happens is that once you invest into this particular strategy, you are essentially buying the stocks which are part of this
part of this particular strategy. When you're subscribing to a wealth basket, these particular stocks or ETFs kind of lie in your demat account, your Paytm Money demat account. Kishore, let me also just add quickly in Hindi as well what you explained here. Sure. So basically, wealth basket भी एक तरह के portfolios ही है, and as Kishore mentioned, these are managed by SEBI registered professionals. मतलब ये सिर्फ वही fund managers होंगे जिनके पास SEBI की तरफ से एक license है. So these are nothing but portfolios, जैसे किशोर कह रहे थे. बट इनमें और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है कि म्यूचुअल फंड्स आर बहुत रेगुलेटेड है, जिसमें उनको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, आप किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उठाओगे, आपको दिखेगा कि उसमें 30-40 स्टॉक्स होंगे, प्लस उनका रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप एक स्टॉक में 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते. तो जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो केस वेल्थ बास्केट में नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा कि जो फंड मैनेजर होगा, जो भी मैनेज कर रहा है ये पोर्टफोलियो, ही विल फोकस ऑन 5 और 6 और इवन आई थिंक ज्यादा स्टॉक्स पे फोकस नहीं करेगा. सो आई थिंक मैक्सिमम 10 से 12 स्टॉक्स होंगे और काफी केसेस में 5 या 6 स्टॉक पे हो सकता है. तो इस केस में क्या होगा कि बिकॉज द मैनेजर इज फोकसिंग ऑन अ वेरी लिमिटेड सेट ऑफ स्टॉक्स, उस केस में आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न भी ज्यादा होंगे. तो अनलाइक म्यूचुअल फंड जहां 50-60 स्टॉक्स डाल रखे हैं और जहां बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे जो मैनेजर होगा, जो सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल होगा, वो बस फोकस करेगा इन्हीं स्टॉक्स पे ताकि आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सके. और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, आपके अकाउंट में वो स्टॉक्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल, अगर एक HDFC का म्यूचुअल फंड आप ले लो, उसमें रिलायंस 10% है, TCS 5% है, तो ये सब स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होंगे, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ म्यूचुअल फंड होगा. बट इन दिस केस, जब आप एक वेल्थ बास्केट खरीदोगे, तो ये जो स्टॉक्स उनमें होंगे वो डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो में दिखेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक वेल्थ बास्केट लिया है जिसमें 20% HDFC है, 20% HDFC बैंक, तो ये स्टॉक्स डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होंगे, अनलाइक म्यूचुअल फंड. So this is the advantage of wealth basket. So basically it's a much more एक बहुत ही बेहतर वर्जन आप म्यूचुअल फंड का कह सकते हैं. So I think Kishore, correct me if I have missed something here. No, Prasad. So you have captured it right. Thanks for explaining it in Hindi. No issues. Yeah. Okay, moving on. So yeah, so these wealth baskets, like I said, so there is an advisor sitting behind all of this complete strategy, and they kind of closely monitor these strategies throughout the time. So they keep on monitoring market conditions, they keep on monitoring the macroeconomic factors, microeconomic factors at a company level. So most of these players kind of resort to some quantitative algorithms like momentum-based algorithms, value-based algorithms, and all of that. And these people keep on monitoring these portfolios, and as and when there is a update to the portfolio, so something like a particular stock which was suggested a month back or whatever time it is. So there is some update in that particular stock, or there is a better stock which could give better returns, which fits into the particular strategy. So then the advisor or the analyst would actually update this particular portfolio, and we would be sending a rebalancing notification to the customers. And through a one-click process, you can complete your rebalancing process, and you can be up to date with the portfolio that the advisor actually suggests you to be in. The weightage, the stocks, the weightage, everything would be according to what the advisor actually suggests you to do. And so we have wealth baskets for possibly for every need that is there. So we have wealth baskets for low risk needs, we have medium risk needs, some hybrid assets, we have sectoral plays in wealth baskets, we have some sort of multi-asset categories where we kind of, based on the market conditions, the advisor actually prescribes which particular asset class to be present in. So something like the dynamic asset allocation that we have in mutual funds. So the asset allocation here also keeps on changing. When markets are actually in a bull run mode, we kind of have more allocation to equity based assets. And when the advisor actually feels that markets are actually going to turn negative, then we kind of shift the entire equity holdings into debt holdings, so that we kind of provide that protection to you, that you're not losing out during the down cycles of the market.
And yeah, so these are completely research driven. Like I said, a lot of quantitative research and qualitative research goes into this whole thing. And there is obviously full transparency and control. So like Prasad also mentioned, so the wealth basket that you buy, the stocks actually lie in your demat account, and you have access to the latest portfolio all the times, and you know what you're holding basically. It's not something like a mutual fund where you're holding a unit of mutual fund, but you don't know what are the underlying stocks. Here you know the stocks that you're holding all the time. Yeah, so to summarize, basically, Wealth Basket is an executable advisory service. So these Wealth Baskets kind of come in themes, strategies, and goals. So the way Wealth Baskets are put into, so like I said, there are some long-term baskets such as evergreen multi-asset baskets, and then if you want to get into sectoral place, you have pharma basket, you have banking and finance basket, you have MNC basket, you have a chemicals basket, and we kind of cover all the top sectors that are there in the market. And so we kind of work with the top advisors in the country. To name a few, we have Capital Mind, led by Deepak Shinoy, and we also have Investor AI, which is completely driven by artificial intelligence and machine learning algorithms. And yeah, so the idea behind this whole thing is that, so we kind of use technology to kind of enable these advisors and kind of distribute their advice to the customers, to customers at a very large scale. That's the idea behind introducing these wealth baskets. So yeah, like I said, these are some of the advantages of wealth baskets when you compare them with mutual funds or portfolio management services, or alternative investments that are there in the market. So mutual funds kind of allow that large scale participation, which is allowed even on wealth baskets as well. And coming to transparency, like I've mentioned, in the mutual funds, you do not know what are the stocks that you're holding. You would only know it on a monthly basis. Whereas in wealth baskets, at all the times, you know what is the exact portfolio that you're holding. Then we have some other advantages like customization, which is something like, so currently we do not have this feature, but it is under the pipe. It is under development actually currently. So we actually offer users to build their own wealth baskets. So you as a customer, you come in, and you may not be actually believing in the advice being given by any of these existing players in the market. You can come and try out your own strategies. You can build your own portfolio and make it a wealth basket and keep on investing into that particular wealth basket. And so this is one of the important features that most of the users have been asking for, and it is under development currently. And one of the other important things is that the advantages of wealth baskets is that the cost of investing into these wealth baskets is very, very less. So typically, if you see mutual funds these days, any large cap mutual funds or small cap or mid cap mutual funds, they come with an expense ratio of close to 1.2%. But if you actually look at some really good performing mutual funds, that could go beyond 1.2% as well. But if you look at wealth baskets, currently we kind of follow something like a flat fee based structure, where the plans start from 2,000 rupees for 6 months period, and going till 3,200 for 1 year. And there are some other baskets as well which charge around 12,000 rupees a year. Depends on advisor to advisor. Basically, each advisor comes with a plan for a basket, and it's a flat fee basically. So what happens is that if you choose a 2,000 rupee basket, so for 1 year you're paying 2,000 rupees, and you can invest how much ever you want to invest in it. So even if you invest 5 lakh rupees, the charge that you incur on this particular basket is only 2,000 rupees. Whereas in a mutual fund, you would end up paying somewhere close to 5,000-6,000 or maybe little over 6,000 rupees for a 5 lakh investment. Whereas in wealth baskets, you could easily pay that 2,000 rupees and actually get the
best in the market basically. And historically, we have seen some back-tested results on also since live returns of wealth baskets, and these wealth baskets have outperformed many of the mutual funds in that particular category. And so all the mutual funds, their performance, everything is there on Paytm Money app. You can go and you can actually browse through and see it for yourself. So even in the long term and even in the short term, they have done really well. I think Kishore, this is a very important point. So मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि जैसे किशोर बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो भी एक्सपेंस रेशियो है वो परसेंटेज टर्म्स में होता है. तो फॉर एग्जांपल आपने अगर 10,000 इन्वेस्ट किए तो उसका 1% लगेगा, जो कि 100 रुपए हो गए. अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए तो 1,000 चार्जेस लगेंगे आपको. बट इन केस ऑफ वेल्थ बास्केट फिक्स्ड फी है, तो आप कितना अमाउंट कर रहे हो इन्वेस्ट वो डज नॉट मैटर. सो फॉर एग्जांपल आई थिंक कोई जैसे किशोर एग्जांपल दे रहे थे, किसी वेल्थ बास्केट का फी सपोज 1,000 पर ईयर, तो इट डज नॉट मैटर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो. आप अगर 1 लाख कर रहे हो, 10 लाख कर रहे हो, आपका फी सेम ही रहेगा. तो उस हिसाब से कॉस्ट के रेफरेंस से भी देखा जाए तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड वेल्थ बास्केट, कि जहां पे म्यूचुअल फंड्स का कॉस्ट आपके इन्वेस्टमेंट साइज के साथ बढ़ते जाता है, वेल्थ बास्केट का सेम रहता है. सो स्पेशली जो बड़े क्लाइंट्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जिनका बहुत ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है, उनके लिए ये फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका कॉस्ट उनके इन्वेस्टमेंट साइज के साथ बढ़ेगा नहीं, इनफैक्ट सेम रहेगा. एंड एड्रेसिंग अ प्रीवियस पॉइंट एज वेल, जैसे किशोर बता रहे थे कि ये पोर्टफोलियोज बहुत ज्यादा स्पेशलाइज रहते हैं. सो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स का टिपिकली कैटेगरी रहता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे जनरल रहता है. बट अगर अभी आप पेटीएम मनी के ऐप पे जाओगे, वेल्थ बास्केट देखोगे, तो आप देखोगे कि उनकी कैटेगरी समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. वेल्थ बास्केट एक बजट फोकस्ड है. तो जैसे फेब में बजट गया और वहां पे गवर्नमेंट ने काफी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन अनाउंस किए, और ये डिसीजन मतलब सिर्फ उस फरवरी के महीने के लिए नहीं, जबकि सालों साल वो इम्पैक्ट करेंगे स्टॉक्स को. तो किसी फंड मैनेजर ने एक स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो बनाया जहां सिर्फ वही स्टॉक्स चूज किए गए जिनको बजट से फायदा हो रहा है. सो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड है. सिमिलरली आप और भी अगर वेल्थ बास्केट देखोगे तो और भी स्पेशलाइज्ड है. फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज्यादा केमिकल्स पे फोकस करना है या फार्मास्यूटिकल्स पे फोकस करना है, तो उनके लिए भी अलग से वेल्थ बास्केट बना रखा है जो सिर्फ वही स्टॉक्स पे फोकस करेगा. तो ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती है वेल्थ बास्केट के लिए. और एज एन इन्वेस्टर, स्पेशली इफ यू आर अ बिग इन्वेस्टर, यू आर अ फोकस्ड इन्वेस्टर, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी इफ यू प्रेफर वेल्थ बास्केट ओवर एनी अदर प्रोडक्ट. So yeah, that's pretty much it. Kishore, you can continue. Okay. Just to add to that, and so the returns that you see in these wealth baskets are actually not comparable to mutual funds. It's much more than mutual funds, and it's actually much more than PMS as well. So if you actually look at these, look at this in a way, so you're getting it at a cheaper cost than mutual funds, and at the same time you're generating better returns than your PMS funds. So it's the best of all the worlds basically. Yeah, just moving on. You can also build your portfolio using these wealth baskets. It's not just about investing in a particular theme or strategy. You want to invest. Sorry. Okay. So it's not just about investing in a particular theme or strategy, something like investing in chemicals momentum because you are interested in it and all of that. You can use these wealth baskets for actually maintaining your entire portfolio. You can actually do your proper asset allocation using these wealth baskets. So there are some so if you know about the concept of core portfolio versus satellite portfolio, core portfolio is actually something which fits into your long-term needs, long-term goals and all of that. This particular portfolio, you would be maintaining it for your long-term needs, such as your retirement needs, or you want to buy a house or something like that. Whereas satellite portfolio is something like which you kind of maintain to make the most out of the existing market conditions. So something like for a fact, that you have read some research reports and all of that saying that chemicals is going to run really well over the next 6 months. So basically that becomes your satellite portfolio. And even in your satellite portfolio, if you know that a particular sector actually is going to have a bull run phase, but you don't know which stocks to choose in that particular portfolio, in that particular sector, you can come and explore the wealth baskets. Inside wealth baskets, in a particular sector, we have the advisor actually creates these particular sectoral wealth baskets using the quantitative and qualitative algorithms, and kind of gives the best in that particular sector.
So we have core portfolios. In the core portfolio, I would say that these are some of the important core portfolio baskets that we have. Something like evergreen, multi-asset conservative, multi-asset moderate, giants of India, gold at equity, and also we have stable momentum, MNC growth. These are some of the core portfolio baskets that I would suggest. And in the satellite, so basically the tactical allocation is basically something like like I've mentioned, you can look at chemicals portfolio, banking and finance portfolio, or some other sectors, something like IT, which is digital India momentum, pharma, consumption. These are some of the other sectors that you could look at in your tactical asset allocation portfolio. So yeah, and coming to the user plans, like I said, so there are two ways. Prasad, you want to add something here? No, I think you pretty much covered it. And earlier points हमने cover कर ही लिए थे. So I think आप subscription का okay. Yeah. So coming to the subscription plans, basically, so we have come up with a unique concept. So basically, usually you have this per basket pricing, whereas what we have done is that we have kind of come up with a subscription plan where you pay us a particular amount, and that actually opens up access to all the baskets in that particular, offered by that particular advisor. So our advisor is basically Quantec Capital, and they have almost 15 baskets on our platform, including the free ones plus the paid ones. And they have come up with two plans, core plan and a pro plan. Core plan may you get 5 wealth baskets, which are largely focused on long-term wealth creation, basically. And pro plan may you get 7 additional baskets, which are primarily focused on sectoral and thematic plays. So the basket pricing starts from 200 rupees a month and goes up till 3,200 rupees for a year. And so if you're kind of new to investing, you don't want to get into sectoral plays and all of that, you could choose a core plan, which covers most of the baskets, the core baskets that I've talked about, the evergreen baskets, the stable momentum basket, and all of that, which would actually satisfy your try to satisfy your long-term goals and all of that. Whereas if you are a little more experienced investor, who knows about, who reads about markets, who understands about which sector is going to run in the coming 12 months or something like that, then you could very well go for a pro plan, which includes all the sectoral and thematic plays. Yeah, that's it from my end. Prasad, you want to take over? Yeah, just like hang on for the previous slide ना, एक बार मैं हिंदी में दिया. So आज जैसे किशोर बता रहे थे, हमने यहाँ पे क्या किया है कि instead of going for single baskets, जहाँ यूजर अगर सपोज फॉर एग्जांपल यूजर को 7-8 बास्केट को सब्सक्राइब करना, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग इंडिविजुअली हर एक का फी भरने के बदले यहाँ पे दे कैन चूज दिस प्लान्स जहाँ पे सारे बास्केट्स को क्लब कर दिया गया. तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट वाला आप जो प्लान देख रहे हो, वहाँ पे 7 बास्केट्स को एक साथ आप पे कर सकते हो सब्सक्रिप्शन फी. तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हर एक बास्केट इंडिविजुअली, आप डायरेक्टली ये सारे का पे करके इट्स अ मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन. सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. एंड किशोर, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स प्रसाद. मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? यस. ओके, कूल. सो द नेक्स्ट फीचर जो हम बात करने वाले हैं वो पॉप्स. एंड लेट मी टेल यू कि ये एकदम अलग से हटके फीचर है. दिस इज नॉट आपका टिपिकल जो इन्वेस्टिंग वाला आपको जो बोरिंग सा लगता है उस टाइप का फीचर नहीं है. यहाँ पे हमने कुछ बहुत ही अलग से एक्साइटिंग, अलग से इंटरेस्टिंग, फनी चीजें ट्राई करने की कोशिश की है. सो बेसिकली हमारा जो गोल था यहाँ पे क्या था कि हम आजकल जो नए टाइप के इन्वेस्टिंग में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो एड्रेस करने का ट्राई करते हैं. तो आप पहला सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का इश्यू होता है कि एक साथ बहुत चीजें हो रही थी. फॉर एग्जांपल लास्ट वीक हमने देखा था कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर का न्यूज आया, अचानक से स्टॉक 10% ऊपर चला गया था. अभी जैसे बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीकेंड में इन्फोसिस का रिजल्ट आया था और स्टॉक 7-8% नीचे गिर गया था. तो तुरंत मतलब एक न्यूज के चक्कर में स्टॉक्स कहाँ 5% ऊपर 5% नीचे तुरंत जा सकता है. तो एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत हमें कंटिन्यूसली मार्केट को फॉलो करना पड़ता है. सेकेंड इश्यू ये है कि लास्ट 2 इयर्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स, नए ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट ज्वाइन किए और ये लोग काफी यंग है और काफी चीजें सीखना चाहते हैं, बट इनके पास एक प्रॉपर सॉलिड बेस नहीं है.
और आपने जैसे देखा ही होगा कि आजकल रील्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब जगह पे चीजें एजुकेशन चलती है, और लाइक लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो आप अगर किसी नए इन्वेस्टर को बोलोगे कि आप जाके किताब पढ़ो इन्वेस्टिंग के लिए, या आप जाके बोलोगे कि आप ये पूरा पॉडकास्ट सुनो इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, तो उनका वो अटेंशन स्पैन है ही नहीं, वो चीज नहीं करेंगे। और आजकल इतने सारे न्यूज सोर्सेस हो गए, पॉडकास्ट हो गए, डैशबोर्ड हो गए, कि एक नया इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं एक्चुअली जाके कहाँ से इन्वेस्टिंग सीखूं, ये कहाँ से मार्केट स्टार्ट है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, पॉप्स क्या है एग्जैक्टली। सो पॉप्स क्या करता है कि ये सारी चीजों को स्पेशली आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से कस्टमाइज करके बहुत ही छोटे मैसेज के फॉर्मेट में लेके आता है। सो व्हाट यहाँ पे हमने जो तरीका ट्राई किया है, अप्रोच ट्राई किया है, कि हमने एक एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को क्लब किया है। सो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एक तो मार्केट से तुरंत जुड़े रहे, जैसे कोई न्यूज आ रहा है उनको अपडेट तुरंत मिले, और दूसरा कि वो उस तरीके से मिले कि उन्हें मजा आए देखने। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं कि इन्फोसिस का प्रॉफिट इतना परसेंट गिर गया है, रेवेन्यू इतना परसेंट बढ़ गया है, ये चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है, आप उतना लंबा पढ़ोगे आधी चीजें आपको समझ में आएगी नहीं, दूसरी आधी चीजें इतना लंबा आर्टिकल हो जाता है कि आप छोड़ दोगे आधी। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन एक मीम के फॉर्म में ला रहे हैं, तो यूजर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो उस तरीके से यूजर को और सीखने का इंटरेस्ट आएगा, और वो मीम के साथ हम एक आर्टिकल का भी लिंक दे देते हैं कि अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है तो वो पढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे पूरा पॉप्स का आइडिया यही था कि वी ट्राई टू मेक इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग मोर फन एंड एजुकेशन। सो उसका फॉर्मेट क्या है कि जैसे आप अगर पेटीएम मनी के ऐप में जाओगे, बाय द वे ये फीचर सारे इक्विटी केवाईसी यूजर्स के लिए, और जो एंड्रॉइड फोन यूज करे उनके लिए। सो ये एंड्रॉइड पे लाइव है फिलहाल, और जिन्होंने भी अपना इक्विटी केवाईसी कंप्लीट कर रखा है, उनको अपने इक्विटी डैशबोर्ड में टॉप राइट में एक पॉपकॉर्न जैसा छोटा सा आइकन दिखेगा, जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है यहाँ पे टॉप में। अगर आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, ये जो राइट वाला स्क्रीन है वो खुलेगा। तो ये बेसिकली पॉप्स फीचर है, और इसका फॉर्मेट हमने बहुत ही सिमिलर टू आप कह सकते हैं मैसेजिंग ऐप की तरीके से रखा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैनल दिख रहे हैं आपको। पहला चैनल है माई पोर्टफोलियो, मार्केट, इन्वेस्टर या डेली फी। तो जो सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, हमने उसको स्प्लिट कर दिया डिफरेंट चैनल्स में, और मैं आपको लेके जाता हूँ हर एक चैनल का इन्फॉर्मेशन के बारे में भी, कि हर एक चैनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो वेरी फर्स्ट चैनल है, हमारा पहला चैनल है, वो है माई पोर्टफोलियो। और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो के बारे में हर हर जानकारी आ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल हर दिन के बेसिस पे अगर आपको देखना हो कि आपके पोर्टफोलियो में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा रहा, सबसे घटिया किसने परफॉर्म किया, आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंट से ऊपर गया, उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हुई। और काफी बार ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो 1% गिरा है, पर निफ्टी 1.5% नीचे गिरा है। तो इन दैट केस भले ही आपका पोर्टफोलियो नीचे गया, बट वो मार्केट से बेटर परफॉर्म किया है। तो ये सब चीजें, ये सब पॉइंट्स अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ एंगल वी आर ट्राइंग टू टेक। तो हम ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम उसको एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ आपको जाके ऐप में रोज देखना कि अच्छा मेरा पोर्टफोलियो कितना परफॉर्म किया है, मेरा स्टॉक कौन सा बेस्ट था, कौन सा वर्स्ट था, निफ्टी से बेटर किया है या कैसा किया है, उसके बदले सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। आपको इवन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स हम बताएंगे कि आपको कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जा रहा है, तो हम आपको एक तुरंत अपडेट दे देंगे ताकि आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकें। सो ये माय पोर्टफोलियो चैनल का समरी था कि यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड सारी जानकारी एक चैनल में आ जाएगी, और इनफैक्ट एक हिस्ट्री भी रहेगी कि आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, पिछले हफ्ते क्या हुआ था। ये सारे मैसेजेस माय पोर्टफोलियो चैनल में आपको मिल जाएंगे। द सेकंड चैनल, और ये सबसे मेरा फेवरेट चैनल, द मार्केट, क्योंकि इसमें सारे फन चीजें। तो जैसे पोर्टफोलियो में हमने क्या किया था, हमने रेस्ट्रिक्ट किया था कि सिर्फ वही चीजें दिखाई जाए जो आपको पोर्टफोलियो में काम आएंगे, आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स रिलेटेड। यहाँ पे हम एक द मार्केट में आपको एक पल्स दे रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, हर एक कंपनी का अर्निंग्स आ रहा है, तो एक आपको एक मीम की तरीके से अपडेट आ जाएगा कि ओके आज इस कंपनी का अर्निंग्स आया, अच्छा आया, बुरा आया, कैसा आया, सब कुछ आ जाएगा। उसके साथ हम कुछ कुछ फन फैक्ट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक, रिलायंस के स्टॉक के बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता ना हो, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एजुकेशनल कंटेंट्स भी आते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर पता करना हो कि इन जनरल कुछ स्टॉक स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ये सारे टर्म्स का हम धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, एक इमेज के साथ, ये टाइप के अपडेट्स देते रहते हैं। साथ में डे के एंड में भी आप देखोगे लेफ्ट में जो आप देख रहे हो मैसेज, एक डेली मार्केट समरी होता है। तो उसमें क्या होता है, हम बताते हैं कि निफ्टी कैसे परफॉर्म किया, मिड कैप स्मॉल कैप कैसे परफॉर्म किए, कौन सा बेस्ट सेक्टर था, कौन सा वर्स्ट सेक्टर था, कौन से टॉप स्टॉक्स थे, कौन से सबसे खराब स्टॉक थे। एक साथ में आप जैसे देख रहे हो, काफी फनी न्यूज है कि जैसे 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बेयर्स की कवर खोली गई है कि जो बुल्स है वो एकदम खुश होकर बेयर्स की कवर पे नाच रहे कि हाँ 2 दिन से मार्केट ऊपर गया है।
तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे आपको एक तो मार्केट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, दूसरा एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और तीसरा एक बहुत फन तरीके से ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे किया जाएगा. सो दैट इज द सेकंड चैनल, द मार्केट. थर्ड स्टॉक चैनल से, और ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीके का एस्पेक्ट है कि फॉर एग्जांपल आपके पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स है, तो जैसे इन 4 स्टॉक के लिए अलग से चैनल बन जाएगा. फॉर एग्जांपल आपके पोर्टफोलियो में है यस बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस और एचडीएफसी. तो आपकी जो पॉप्स है उसके अंदर ये 4 चैनल खुल जाएंगे, और फिर इन चैनल्स में स्पेसिफिक टू यस बैंक सारी न्यूज आएगी. तो एक टाइप का तो अपडेट ये है कि आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, आपका यस बैंक कैसा परफॉर्म किया वो. उसके अलावा जैसे आप देखोगे कि अर्निंग्स आ रहा है, तो आपको जाके न्यूज में ढूंढना पड़ेगा कि यार मेरा जो स्टॉक मैंने खरीद रखा है उसका अर्निंग्स कब आएगा. इंस्टेंट यहाँ पे आपको 1-2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि कल आपके स्टॉक का अर्निंग्स है. तो सपोज आपको कोई एक्शन लेना हो, आपको उसमें स्टेक बढ़ाना हो, कम करना हो, आप तुरंत ले सकते हो. कभी डिविडेंड अनाउंस होता है, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके स्टॉक के बारे में उस स्टॉक चैनल में मिल जाएगी. तो जैसे माय पोर्टफोलियो चैनल का और एक स्पेशलाइज्ड वर्जन कह सकते हैं कि आपने जो स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं उसके बारे में और जो भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है वो उस चैनल में मिल जाएगी. तो ये था अपना थर्ड टाइप, स्टॉक चैनल. उसके अलावा हमने प्रीमियम चैनल्स ऐड करे थे. नाउ प्रीमियम चैनल्स में हमारा जो वेरी फर्स्ट पार्टनर है वो इन्वेस्टर एआई है. जैसे आई थिंक किशोर ने भी अपने ब्रीफिंग में बताया था कि इन्वेस्टर एआई एक वेल्थ बास्केट के साथ भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एक पोर्टफोलियो ऑफर करता है. पर यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टर एआई की चैनल है वो आपको ट्रेड रिकमेंडेशंस ऑफर करती है. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन्वेस्टर एआई के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वो एक लंदन बेस्ड स्टार्टअप है, एंड दे आर ऑल्सो रजिस्टर्ड विद सेबी. तो उनके पास सेबी की तरफ से रिसर्च एनालिस्ट का एक लाइसेंस है. So they are very authorized to give trade recommendation to our users. और वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका फॉलो करते हैं. तो उनके नाम में ही एआई है, तो उनका जो मॉडल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. तो दे ऑलमोस्ट जैसे उनके ब्रीफिंग में भी लिखा हुआ है कि दे ऑलमोस्ट एनालाइज 5 मिलियन मतलब 50 करोड़ डेटा पॉइंट्स एनालाइज करते हैं, वो स्टॉक सिग्नल्स जनरेट करते हैं, और उन स्टॉक सिग्नल्स के बेसिस पे वो लोग ट्रेड रिकमेंडेशंस देते हैं. और उनकी जो बैक टेस्टेड इन्फॉर्मेशन उस पर आप देख सकते हैं कि और 75% एक्यूरेसी, मतलब जितने अगर उन्होंने 10 रिकमेंडेशन दिए तो 7 या 8 उनके रिकमेंडेशन हमेशा प्रॉफिट में जाते हैं. तो इन्वेस्टर एआई इज बेसिकली प्रीमियम चैनल, और एक बार आप अगर सब्सक्राइब करोगे उसको तो आपको ये बाय और सेल रिकमेंडेशन देते रहेंगे. जैसे राइट में आप देख सकते हो कि उन्होंने सजेस्ट किया कि एक्साइड इंडिया बाय करना है. उन्होंने टारगेट प्राइस 1 दिया, टारगेट प्राइस 2 दिया, स्टॉप लॉस दिया. तो सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है कि किस स्टॉक प्राइस पे एंटर करना है, किस प्राइस पे एग्जिट करना है, किस प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो. और ये रोज के लगभग 1 या 2 ट्रेड रिकमेंडेशन आपको देते रहते हैं. एंड इनफैक्ट अगर आप चैनल पे जाओगे तो आप देखोगे कि 2 हफ्ते का फ्री ट्रायल भी. तो अगर आपको लगता है कि अगर मैं सब्सक्राइब क्यों करूँ इन्वेस्टर एआई, तो मुझे पहले देखना है कि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो काम करते हैं भी या नहीं, तो आप वो फ्री ट्रायल ऑप्ट कर सकते हो. 2 हफ्ते तक आप सारे ट्रेड्स देख सकते हो कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और वंस यू आर सेटिस्फाइड आप जाके वो सब्सक्राइब कर सकते हो. सो दैट इज इन्वेस्टर एआई. इन्वेस्टर एआई की तरह ही बेसिकली हम यहाँ पे एक मार्केट प्लेस बना रहे. तो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर एआई एक तरीके एक प्रोडक्ट हो गया. इस तरह से और 2-3 हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स और एनालिस्ट को ला रहे हैं जो और ट्रेड रिकमेंडेशंस और इनफैक्ट एफ&ओ रिलेटेड ट्रेड रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करेंगे. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रीमियम चैनल. सेकंड प्रीमियम चैनल हमारा है डेली फी. तो जैसे मैं इस प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में बात कर रहा था कि न्यूज आर्टिकल्स इतने सारे और इतने लंबे होते हैं. आप अगर अभी जाके एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बारे में सर्च करोगे आपको 50 आर्टिकल मिल जाएगा. 50 आर्टिकल में पता नहीं कितने पैराग्राफ भर रखे होंगे, और आपको नहीं पता कि इसमें चीज काम की क्या है. तो बेसिकली डेली ब्रीफ क्या करता है कि जैसे एक न्यूज सोर्स हो गया, एक न्यूज पॉइंट हो गया कि एचडीएफसी का मर्जर हो रहा है, ठीक है. वो क्या करेगा, वो 10-12 आर्टिकल सारे कंबाइन करेगा, सारे पढ़ेगा, उनको कंबाइन करेगा, उसमें से देखेगा काम की चीज क्या है, और वही चीजों को बुलेट पॉइंट्स में बना के आपको देगा कि बेसिकली इतना उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उनका ये शेयर स्वैप रेशियो होने वाला है, इतना इसका स्टॉक पे इम्पैक्ट हो सकता है, कितने साल के बाद ये मर्जर होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको मिल जाएगी. सो दिस इज व्हाट डेली ब्रीफ डज. सो ये हमारे 2 प्रीमियम चैनल्स है फिलहाल, और हम प्रीमियम चैनल्स ऐड करने वाले. सो ये सारे चैनल्स का ओवरव्यू था. बेसिकली पॉप्स में हम यही करने का ट्राई कर रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि यूजर को 5 चीजें अलग अलग चीजें ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है. पोर्टफोलियो देखने के लिए मैं जाऊंगा अपने पोर्टफोलियो सेक्शन में, देखूंगा एक स्टॉक कैसे परफॉर्म किया है. अगर मेरे को न्यूज चाहिए तो मैं 10 न्यूज चैनल ढूंढूंगा. अगर मेरे को डैशबोर्ड चाहिए, मेरे को देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मैं बार बार जाके 50 मनी कंट्रोल देखूंगा, ये इकोनॉमिक टाइम्स देखूंगा, लाइव मिनट पढ़ूंगा कि भाई क्या हो रहा है. अगर मेरे को मीम्स चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मैं ट्विटर पे जाके देखूंगा कि भाई कौन मीम्स क्या शेयर कर रहा है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीजें कंबाइन होकर एक जगह पे आ रही है,
और ये बहुत लेजर फोकस्ड है। मतलब जैसे आपने देखा था कि स्टॉक चैनल्स उन्हीं स्टॉक्स के लिए क्रिएट हो रहा है जिनमें आपका पोर्टफोलियो है। मतलब कोई भी फालतू स्पैम मैसेज नहीं आएगा आपको, कोई फालतू का कोई टिप्स नहीं देगा कि भाई ये खरीदो, ये बेच दो, ये कोई फालतू की चीजें नहीं होंगी। स्पेसिफिकली आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड और आपके मार्केट के रिलेटेड जो न्यूज है, जो अपडेट्स है, वही यहाँ पे आएंगे और एक बहुत फन तरीके से आएंगे। So yeah, that's pretty much it. And with that, I'll conclude my presentation. Danish, I think we can take questions.